Hello and welcome everyone. My name is Ashwin Joglekar and I am from Resonance PCCP division. आज हम आपके सामने लेके आए हैं द चैप्टर अगेन फ्रॉम योर हिस्ट्री पोर्शन द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड. यहाँ पे आज की वीडियो में हम इस चैप्टर में जो अभी करंटली CBSE में फॉर 2023-24 के हिसाब से जो सिलेबस है एंड जो रिड्यूस्ड पोर्शन है हम सिर्फ उसी को कवर करेंगे. ऑलराइट, सो लेट अस क्विकली बिगिन विद द चैप्टर. नाउ द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड. The term global world relates with globalization. Now globalization as a term is 60-70 years old, but there were trends which we had seen from ancient times between different regions, how they carried on trading, or when people migrated from one place to another in search of works or other things. So that is all we will be looking at in this chapter. That is features of pre-modern world. अब इसमें ये कहा गया है, अगर मैं थोड़ा सा एक जस्ट एक शॉर्ट उसमें बताऊं कि आगे वाले चैप्टर्स में आप देखते हो पोर्शन में जो है इस चैप्टर में, दैट इज कि किस तरह से ग्लोबल वर्ल्ड डेवलप हुआ. राइट, एक ग्लोबल वर्ल्ड किस तरह से फॉर्म हुआ. तो हम अभी जो इस बार के सिलेबस में है सिर्फ प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाला एस्पेक्ट है जो हम देखेंगे अब. सो नाउ ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टेडीली मोर इंटरलिंक्ड. कैसे इंटरलिंक्ड हुई है? ऑब्वियसली बात है कि उनमें आपस में कम्युनिकेशन बढ़ा है, ठीक है, आपस में लेन देन बढ़ा है, इसलिए इंटरलिंकिंगनेस बढ़ी है. ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स. तो अभी एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं. ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट जो थे और जो पिलग्रिम्स करने जाते थे, पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस. अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन was linked with West Asia. जो हम कौड़ी, ठीक है, कौरीज जो बोलते हैं, सी शेल्स were also used as a form of currency at that time. Silk routes, second topic जो आता है आपका. Silk routes, it interconnected modern trade and cultural links between distant parts of the world. Now Silk route referred to the route, basically the westbound silk cargoes. That is from China, which traveled towards Europe. In turn, from Europe, precious metals flowed. Most well-known silk routes connected China to Europe. और अगेन इसी में इंटरलिंकिंग पॉइंट्स होते थे जहां पे बाकी चीजें भी ट्रेड होती थी. देन फूड ट्रैवल्स. ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवल्ड. तो जहां पे ये ट्रेडर्स या ट्रैवलर्स पहुंचे थे नई जगहों पे, वहां पे उन्होंने नए क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करे. Potatoes, soya, maize, groundnuts, tomatoes, chilies introduced in Europe and Asia after America was discovered. Noodles again traveled west from China to become spaghetti. That is how food travels. जो आज हम अपने यहाँ पे जनरली जो हम food enjoy करते हैं, so probably maybe our ancestors never knew that food existed. This is because of the travelers who traveled these vast distances and carried with them these food crops, and therefore it then later on spread to other parts of the world. उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है आपका इसमें, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड. अब कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड में हम बात कर रहे हैं. 16th century यूरोपियन सेलर्स फाउंड अ सी रूट टू एशिया एंड अमेरिका. द पोर्चुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका. हियर दे यूज्ड probably, as we know, smallpox. See, Spanish and Portuguese people had superior firepower as compared to the people of South America at that time. But here, not the machine guns the guns or the firepower proved to be a killer. यहाँ पे सबसे deadly weapon क्या prove हुआ था? एक disease. Now disease एक ऐसी चीज थी, देखो guns आप किसी से छीन के उन्हीं पे वापस तान सकते हो. Same thing, probably you can buy weapons and rise up or have an army against your enemies. But smallpox एक ऐसा disease था. Now Europeans जो अपनी body में इस disease को carry कर रहे थे, they were immune to it. But the natives were not immune to it. So therefore it spread like a wildfire and again devastated entire people who were caught with this disease, and because they were not immune to this particular disease, and therefore smallpox paved the way for these conquerors to come and claim their land. The most powerful weapon of Spanish conquerors was smallpox, which they carried to America.
ऑलराइट, तो ये छोटा सा ही पोर्शन है जो इस मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में से आ रहा है आपका, ठीक है। ये चैप्टर काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है, ऑलमोस्ट पूरा ही चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में से हम देखते हैं तो सारे क्वेश्चंस नहीं लिए यहां से, क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस लिए जो रेलेवेंट है हमारे सिलेबस से। तो पहला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस which took place before the 17th century, choosing one example from Asia and one from Americas। तो अगर एशिया की बात करें हम, तो एशिया से हमारा एग्जाम्पल होगा अबाउट सिल्क रूट, ठीक है। कैसे सिल्क बाउंड कार्गोज ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना टूवर्ड्स द वेस्ट, एंड अगेन स्पाइसेस एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, चाइनीज पॉटरी ऑल्सो वर ट्रेडेड अलॉन्ग दिस रूट। तो एशिया वाला, एंड इवन क्रिश्चियन मिशनरीज केम फ्रॉम दिस सिल्क रूट्स टू प्रीच। Much before them, the Muslim preachers came through this route, and much more before that, the Buddhist preachers also went through the same routes to preach or to spread their religion। तो एशिया का सिल्क रूट एंड अमेरिकास, अमेरिका में जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई बाय क्रिस्टोफर कोलंबस, यहाँ पे अमेरिका अगेन हैज बीन रिफर्ड टू एज द कंप्लीट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एज वेल एज द कैरिबियन। उसी के कलेक्टिवली यहाँ पे अमेरिका रेफर करा गया फॉर दिस चैप्टर। सो अमेरिका में फूड ट्रेवल्स वाला हम पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अगेन फूड ट्रेवल्स में क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड क्रॉप्स विच ट्रेवल्ड फ्रॉम दिस एंड रीच्ड अदर रीजन्स, लाइक फॉर एग्जांपल अबाउट पोटैटो, ठीक है। पोटैटो जब यूरोप पहुंचा, ठीक है, तो आयरिश पीपल हु आर नॉट दैट हु आर वेरी पुअर, फॉर देम पोटैटो वाज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर देम, ठीक है, एंड दे बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटो व्हेन देयर वाज अ आयरिश पोटैटो फेमीन, potato famine। So that time many of the people perished because they could not find sufficient food to eat। Explain how the global transfer of disease, second question पे आते हैं, global transfer of disease in the pre-modern world helped in the colonization of Americas। Now again global transfer of disease से हमारा यहाँ पे मतलब है how Spanish conquerors were able to conquer Americas, ठीक है, with the help of the disease which they had on their selves, on their body, that is of smallpox। So even when Spanish and Portugal or Portuguese conquerors had a superior firepower with them, still smallpox proved to be a deadly killer, and it because the Europeans themselves were immune to smallpox, when they were carrying this on their body, and when these conquerors reached the continent of Americas, it spread to the entire continent and was a very devastating killer, or probably eliminated the entire civilizations। So this is the answer for the second thing, that is explain how the global transfer of disease in pre-modern world helped the colonization, and that is how, because there was no one left, so easily it became quite easy for Spanish as well as Portuguese conquerors to colonize the Americas। So that is all for this chapter. Thank you so much for watching this।